गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। आज मैं सबको इस अवसर पर जिसमें हम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें स्वागत करता हूं। जो श्रोता हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, पूरे देश से जुड़े हुए हैं, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और स्टार्टअप रनवे प्रोग्राम की जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हमारे बीच में ऑनरेबल श्री प्रताप चंद्र षडंगी जी हैं, जो माननीय मंत्री राज्य कक्षा की एमएसएमई भारत सरकार की हैं, वो भी उपस्थित हैं। हमारे बीच में आई हब की चीफ मेंटर प्रोफेसर हिमांशु पांडे उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन श्री एम नागराजन सर भी उपस्थित हैं। ऑनरेबल भूपेंद्र सिंह चुडासमा शिक्षा मंत्री गुजरात सरकार कुछ कार्यवश अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बट उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज कंग्रेचुलेट all the participants who have enrolled in this program for their successful beginning of Startup Runway Flagship program. मैं अनुरोध करता हूं प्रोफेसर हिमांशु पांड्या, चीफ मेंटर आई हब जी से कि वो अपने प्रारंभिक भाषण में हमारी जो इनिशिएटिव्स हैं इनोवेशंस के बारे में, उसकी रूपरेख के बारे में कुछ बिंदु रखें। नमस्कार। आज के इस स्टार्टअप रनवे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रताप चंद्र जी, जो कि केंद्रीय मंत्रालय में एमएसएमई के कार्यभार संभाले हुए हैं। सम्माननीय मंत्री जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आई हब एक गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एंटरप्राइज है जिसमें अलग अलग 17 कार्यक्रम जो नए स्टार्टअप और उद्यमशील है उनके लिए प्रस्तुत है। इन सब कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज जिसका हम आपके कर कमलों द्वारा उद्घाटन करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो है स्टार्टअप रनवे। ये कार्यक्रम ऐसा है सर जिसमें ये जो नए नए युवा हैं, जिनके पास प्रतिभा है, कुछ करने का जज्बा है, और उनके पास उनको साक्षात्कार करने के लिए माध्यम नहीं है, उनके पास वो चीजें नहीं है जो कि उनको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सके। उसमें गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इनिशिएटिव्स लेके एक स्टार्टअप रनवे कार्यक्रम को लॉन्च किया है, जिससे कि ये जो नए युवा है उनको आईपीआर की ट्रेनिंग चाहिए, उनको अपनी प्रोडक्ट को रिफाइन करना है, प्रोडक्ट को मार्केट करना है, और ये सारी चीजों में जो समय लगता है उसको कम करने के लिए इफ दैट आइडिया इज दैट प्रॉमिसिंग देन वी विल सपोर्ट देम टू डायरेक्टली टू द मार्केट, सो वी कैन अवॉइड फ्यू थिंग्स इन बिटवीन। सो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये एक एक्सेलरेशन जैसा प्रोग्राम है जिसमें कि स्टार्टअप को सीधा उसकी जो ध्येय है, उसका जो एम है, उस तक पहुंचाया जा सके। इस कार्यक्रम में आज आपने समय निकाला, बिल्कुल व्यस्त कार्यक्रम था आपका, आज पार्लियामेंट से सीधा आप यहाँ पे आए और हमारे बीच उपस्थित रहे। ये हमारे युवाओं के लिए बड़ा ही प्रोत्साहक रहेगा और आपका मार्गदर्शन इनको आगे एक भव्य भारत के निर्माण में अपना योगदान देने में मदद करेगा। हमारे गुजरात सरकार के मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी चुडासमा, जिन्होंने अपना संदेश इस कार्यक्रम के लिए दिया है, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे ले जाने के लिए युवाओं को जिस तरह से मदद करनी चाहिए, उन सभी क्षेत्रों के लिए आई हब की ये सारी जो प्रवृत्ति है इनको सराहा है, उनको हमको बधाई दी है। आपको बताना चाहेंगे हमारे स्टेट की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मैडम अंजू शर्मा, शी इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट फॉर ईच एंड एवरी एंडेवर व्हाट वी आर टेकिंग एट आई हब। सो आज वो भी हमारे बीच उपस्थित है। आपको अवगत कराना चाहेंगे सर, ये आई हब ने पहली बार पूरे देश में एक आईपीआर का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जो पिछले हफ्ते ही खत्म हुआ, जिसमें 5000 से ज्यादा मेंटर्स को हमने आईपीआर की ट्रेनिंग दी। ये वो ट्रेनर्स है जो कि स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे। सो इन अ वे यू कैन से इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ अ ट्रेनर्स प्रोग्राम व्हाट वी हैव लॉन्च। इसके अलावा हर शनिवार को हम स्टार्टअप के क्षेत्र में अलग अलग प्रतिभाओं को बुलाते हैं जो युवाओं से अपनी बात करते हैं, अपनी जर्नी बताते हैं, हाउ दे प्रोग्रेस्ड एंड what was the source of their inspiration for that entity what they become as a company or as a startup। उन सबको बुला के
हम इनसे प्रत्यक्ष करवाते हैं और उनसे वार्तालाप करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। इसी श्रृंखला में 15 कार्यक्रम हो चुके हैं। इस पैंडेमिक के दरमियान iHub ने 100 से ज़्यादा वेबिनार करके अपनी पूरी क्षमता के साथ लगभग 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को सीधा मार्गदर्शन दिया है और उनको इस कार्य में जोड़ा है। आज आपकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी प्रेरक रही और आप हमारे युवाओं को वो मार्गदर्शन देंगे जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको आगे ले जाके भारत का जो रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रख के कैसे स्टार्टअप डेवलप किया जाए। क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि हर एक के पास आइडिया बहुत है, उनकी संभावनाएं भी बहुत है, पर उसको जब हम फील्ड में एप्लीकेशंस में ले जाते हैं, तब वो फेल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि एमएसएमई को जो तक कठिनाइयाँ हैं, वो कठिनाइयाँ इन स्टार्टअप के छोटे-छोटे इनोवेशंस में छुपी हुई है। अगर हम दोनों को लिंक कर दें, एक नेटवर्क पे ले आए, मुझे लगता है बहुत सारा प्रोडक्शन लॉस और प्रोडक्शन रिफाइनमेंट ये सब हम कर सकते हैं। तो आज ये बहुत ही बड़ा सौभाग्यपूर्ण दिवस है, जब हमारे बीच माननीय मंत्री श्री उपलब्ध है, जो कि एमएसएमई को ही एड्रेस करते हैं और हमारे स्टार्टअप जो प्राइमरी इनोवेशंस करते हैं, वो भी एमएसएमई के बहुत करीब होते हैं। तो अगर ये नेटवर्किंग एक एस्टैब्लिश हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे। ज़्यादा न बोलते हुए मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Himanshu Pandya, for sharing your valuable words. और आपने ये जो रूपरेख रखी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज की जो चैलेंजेस हैं, उसको ऊपर हमारे विद्यार्थी और इनोवेशन और स्टार्टअप कैसे काम करें, ये एक बहुत प्रयोगात्मक प्रक्रिया है, इसके ऊपर हम जरूर काम कर रहे हैं। मैं iHub टीवी को अनुरोध करूंगा टू शेयर ए वीडियो अबाउट iHub एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कि हम इनोवेशंस में क्या काम कर रहे हैं। Over the years, with proactive policies from Government of Gujarat, focus on ease of doing business, vigorous infrastructural progress, and tech progress, Gujarat has emerged to be one of the most sought-after startup destinations of India. The ecosystem for startups and innovations has been made possible through Gujarat Student Startup and Innovation Hub. iHub, established under SSIB by Education Department, Government of Gujarat, incorporated under the provision of Section 8 of the Companies Act 2013. iHub promises all that it takes to build a robust startup framework for the state. Its upcoming campus, spread over an area of 15,000 square meters, will emerge to be a landmark destination of the state. With state-of-the-art infrastructure, amenities and services like futuristic and advanced technology labs, industrial training partners, agile and collaborative co-working space, single window solution for pre-incubation support, mentoring, funding and IPR support. Currently functioning from its transitory campus at Knowledge Consortium of Gujarat in Ahmedabad, iHub successfully acts as a catalyst in creating a stronger startup vision across the state. Here, pre-incubation activities take shape. Early-stage entrepreneurs and innovators network with industry and academia, and ideas find the expertise and funding to transform into successful business models. Flagship initiatives like Startup Samarth, Startup Prashansa, Startup Bloom, Startup Grow, Startup Sathi, Startup Saksham, Startup Gunj, Startup Mart, Startup Samaj, and Startup Window have been successfully igniting and nurturing innovations and startups at iHub. iHub is where you enter with an idea and leave with a product. It is where your startup is made sustainable to scale up in the market. It has been fostering innovations by carefully nurturing concepts, capabilities, and culture. Startups being born every day. Experts coming in to solve challenges. Corporates collaborating. iHub will indeed grow to become the epicenter of global aspirations of today's youth. With over 3 lakh students outreached, 1,000 prototypes supported, 400 patents filed, 3,500 projects supported,
130 Granthi institutes and universities. iHub under SSIP has proved itself to be the game changer in accelerating Gujarat's startup journey and will continue to revolutionize the incubation landscape of the state. iHub, your wings to startup and innovate. Let us together make Gujarat the startup capital of India. Thank you so much for this wonderful video. This highlights how the student startup innovation policy in Gujarat under the leadership of Honorable Education Minister Sri Chudasama ji, Honorable Principal Secretary Anju Sharma ji, the entire team led by Dr. Pandya, Mr. Nagarajan has done a commendable job by involving youth for making an impact at the grassroots level. मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय अंजू शर्मा मैडम, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, जो चेयरपर्सन iHub हैं, और ये स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी वाज हिज ब्रेन चाइल्ड, और उस पॉलिसी को एक आइडिया से लेकर एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग तक की जो जर्नी रहा है, उसको मैडम के मार्गदर्शन में हजारों संख्या में विद्यार्थी इसकी बेनिफिशियरी बने हैं. मैं अनुरोध करता हूं मैडम अंजू शर्मा जी को टू एड्रेस दिस. नमस्कार. माननीय श्री सारंगी जी, MOS MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे iHub के चीफ मेंटर श्री प्रोफेसर हिमांशु पांडे जी, डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री नागराजन जी, और iHub के MD श्री हिरण्मय जी. आज हमारे बीच में हमारे शिक्षण मंत्री श्री चुडासमा जी भी हाजिर रहने वाले थे, पर उनको किसी जरूरी काम से राजकोट जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं रह पाए हैं. उन्होंने अपनी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं हमें दी हैं. जैसा कि आपने फिल्म में देखा और जैसा कि हिरण्मय मोहंता ने अपने भाषण में बताया और डॉक्टर पंड्या ने बताया कि iHub 100% गुजरात सरकार की एक सेक्शन 8 कंपनी है जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए और स्टार्टअप्स को सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो से ऑपरेट कर रही है. 2019 में ये एंटिटी बनाई गई थी और इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो 2017 की हमारी स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी है, उसके तहत इसको एक कॉमन रिसोर्स सेंटर की तरह डेवलप किया जाए. iHub की एक ये विशेषता है कि दिस इज अ मल्टीपल इंक्यूबेटर एंड दिस इज ऑल्सो अ सपोर्ट सिस्टम. जैसे कि खाली इंक्यूबेटर्स होते हैं जो कि स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करते हैं और उनको आगे ले जाते हैं, iHub एक ऐसी फैसिलिटी के तरीके से डेवलप किया गया है जिसमें ना सिर्फ इंक्यूबेशन है, एक्सेलरेशन भी है और प्री इंक्यूबेशन भी है. यदि किसी विद्यार्थी के मन में कोई भी आइडिया है, कोई भी एस्पिरेशन है, तो सिर्फ उन एस्पिरेशंस को लेकर iHub में आ सकता है और यहाँ पर उसको पूरी मदद अपने दिमाग में आइडिया डेवलप करने की भी मिल सकती है. सो फ्रॉम माइंड टू मार्केट सारी फैसिलिटीज हम यहाँ पर प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं. इस हमारे प्रयास में जो हमारे सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे इनोवेटर्स हैं, और हमारे जो इनोवेटर्स हैं वो मंत्री जी आपके भी स्टेक होल्डर्स हैं, बिकॉज वो माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस के जो सारे जो उनका मार्केट तक जाता है तो वो MSME के परव्यू में आते हैं. तो iHub के स्टेक होल्डर और MSME के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कॉमन है. iHub में हमारे जो इनोवेटर स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, उनके जो शुरू से जब वो प्री इंक्यूबेशन से कार्य करते हैं या इंक्यूबेशन में आते हैं या अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स इनको कहते हैं, तो उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं. उनको बिजनेस मॉडल्स रिफाइन करने होते हैं, उनको रेवेन्यू मॉडल्स रिफाइन करने होते हैं, मार्केटिंग प्रोसेसेस रिफाइन करने होते हैं, उनको फंडिंग कैसे लेनी है वो सब उनको जानकारी लेनी होती है, लीगल कंप्लायंसेस कैसे करनी है वो सब जानकारी लेनी होती है. इसी के लिए हमने ये रनवे प्रोग्राम को डिजाइन किया है. जो ये रनवे प्रोग्राम है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि रनवे जो है, जैसे जहाज को उड़ने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए एक रनवे की जरूरत होती है,
जिस पर वो चल के ऊपर टेक ऑफ करता है, ऐसे ही रनवे प्रोग्राम अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जो है उनको वो एक रनवे देता है, एक इनिशियल ओरिएंटेशन देता है, जिसमें से वो ज्ञान लेकर और जिसमें से वो जानकारी लेकर आगे एक प्रॉपर स्टार्टअप जैसे टेकअप कर सकते हैं। और इसके लिए इस रनवे प्रोग्राम में 50 से भी ज्यादा मॉड्यूल्स डिजाइन करे गए हैं। इसमें लगभग 25 से भी ऊपर एमिनेंट स्पीकर्स आके स्टार्टअप्स को गाइड करने वाले हैं। और इसके जो बेनिफिशरीज हैं ज्यादातर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं, खास करके स्टूडेंट स्टार्टअप्स हैं जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि आपके विभाग से, आपके मंत्रालय से हमको बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम आपके सचिव श्री ए.के. शर्मा साहब हमको मार्गदर्शन भी देते हैं और सपोर्ट भी देते हैं। आपकी मिनिस्ट्री के और भी विभागों से हमको काफी सपोर्ट मिल रहा है और हम ये भी चाहते हैं कि हम आपके विभाग के इंक्यूबेटर के जैसे भी मान्यता प्राप्त करें और उसके लिए हम आपके साथ कार्य करना चाहते हैं। और साथ में जो एमएसएमई स्टार्टअप्स के लिए सपोर्ट देती है सिडबी के माध्यम से, उसके साथ भी हम जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे कि हम उनके और हमारे काम में जहां सिमिलैरिटी है, जहां ओवरलैप है, हम उसको यूज कर सकें। जो जनवरी 2017 में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लॉन्च करी गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था स्टूडेंट्स को स्टार्टअप के प्रवाह में, स्टार्टअप की धारा में जोड़ना। और इस हमारे उद्देश्य में हम काफी सफल हुए हैं और लगभग 3 सालों में हम 7 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों को स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए सेंसिटाइज कर चुके हैं। यही नहीं, लगभग 600 से ऊपर स्टार्टअप हम स्टूडेंट के क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें काफी स्टार्टअप्स हमारी यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेट हो रहे हैं और काफी सारे स्टार्टअप लगभग 21 के जितने स्टार्टअप हमारे आई हब में भी इंक्यूबेट हो रहे हैं। और यही एक कारण है कि जो एक टीम के तरीके से उद्योग विभाग, शिक्षण विभाग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग गुजरात में काम कर रहा है कि हम लास्ट 2 ईयर्स से स्टार्टअप रैंकिंग में प्रथम स्थान ले रहे हैं। लगभग 650 से भी ज्यादा 681 IPR हमारे विद्यार्थियों ने दाखिल किए हैं, जो एक अभूतपूर्व बात है। और ये विद्यार्थी बहुत छोटे छोटे संस्थानों से आते हैं। ये विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि बड़े संस्थानों से आते हों, बहुत छोटे संस्थानों से आते हैं और इनको पूरा IPR का सपोर्ट गुजरात सरकार प्रोवाइड करती है। SSIP के थ्रू उनको सहायता मिलती है और उनका कार्य किया जाता है। इंक्यूबेशंस में भी हमारे जो GUSEC के इंक्यूबेटर हैं या हमारे अन्य यूनिवर्सिटीज के इंक्यूबेटर हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये स्टार्टअप रनवे के माध्यम से हम जो हमारे बडिंग स्टार्टअप्स हैं, हमारे बडिंग इनोवेटर्स हैं, उभरते हुए इनोवेटर्स हैं, इनको हम मेन स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, इनको हम हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आई हब जो है वो इनका एक सतत मार्गदर्शक बने और सतत इनकी इस विकास प्रक्रिया में जुड़ा रहे और इनको एक रास्ता दिखाता रहे, जिससे कि ये लोग जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बने। और सबसे बड़ा जो SSIP का उद्देश्य है वो यही है कि विद्यार्थियों को जॉब सीकिंग से जॉब क्रिएटिंग की तरफ डाइवर्ट किया जाए। और जो स्टार्टअप्स का एक इम्पोर्टेंट जो हमारा नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने दिया है, स्टार्टअप इंडिया, उसमें ये लोग जुड़ सके और एक भारत को मेक इन इंडिया के माध्यम से वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक प्लेयर की तरह से हम स्थापित कर सके। इसके लिए हम काफी सारे एकेडमिक पार्टनर्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स से भी जुड़ रहे हैं और कई सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी हमारे साथ काम कर रही हैं। हम लास्ट 2 साल से इंडस्ट्रियल हैकेथॉन करते हैं, जिसमें सिर्फ लार्ज और मीडियम स्केल इंटरप्राइज ही नहीं, पर MSME के लगभग 150 से ज्यादा चैलेंजेस हमारे विद्यार्थी टैकल करते हैं और फिर उनको जो उसमें से सेलेक्टेड सॉल्यूशंस हैं
उनको उनके जो जिनकी वो प्रॉब्लम्स हैं उनके द्वारा इंक्यूबेट करा जाता है। हमने जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं उसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है माइंड टू मार्केट, और माइंड टू मार्केट प्रोग्राम के तहत हम अलग अलग सेक्टर से जुड़ रहे हैं, जैसे कि हम ऊर्जा सेक्टर से, डिफेंस सेक्टर से, या फिर FMCG सेक्टर से, इन सब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, इन सब से हम जुड़ रहे हैं, जिससे कि इन सेक्टर्स के जितने भी चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस पे हमारे विद्यार्थी काम कर सकें और उनमें से छोटे 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 उद्योग निकल सकें, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स निकल सकें, जो इस देश को मेक इन इंडिया का जो पाथ है उस पे फॉर्मली एस्टैब्लिश कर सके और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी कम हो सके। आज आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए। आज हमारे स्टार्टअप रनवे प्रोग्राम का हम लॉन्च कर रहे हैं आपके हाथ से। ये हमारे लिए बहुत ही एक प्रिविलेज की बात है और हम चाहते हैं कि MSME मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात सरकार दोनों साथ मिलकर यदि वो कड़ी जुड़ेगी तो आने वाले भविष्य में हम हमारे जो स्टार्टअप एस्पिरेंट्स विद्यार्थी हैं उनके लिए हम बहुत ही एक अच्छा मार्ग प्रदान कर सकते हैं और विकास के पथ पर साथ साथ चल सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आप आए और आप हमारे स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देंगे और हमारे स्टार्टअप्स जो है, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से वो आपको निराश नहीं करेंगे और बहुत ही लगन से वो लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत इवन कोविड के समय में भी इनोवेट व्हाइल यू आइसोलेट करके हमने एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें लगभग 50 से भी ज्यादा स्टार्टअप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने में जुड़े, चाहे वो मास्क बनाना हो, चाहे वो डिसइंफेक्टेंट करना हो, चाहे उनको ट्रैकिंग करनी हो, ऐसे अलग अलग इनोवेटिव प्रयोग उन्होंने किए और काफी सारे स्टार्टअप से वो लोग जुड़े और काफी इसमें उन्होंने कोविड में भी अच्छा काम किया है। इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करें। आप थैंक यू। स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी का महत्वपूर्ण जो भूमिका है गुजरात में, उसको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है और हमारी अच्छी नसीब है कि माननीय मंत्री श्री भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब मैं हिरणमय जी से विनती करूंगा कि आगे का कार्यक्रम Thank you, sir. कि आगे बढ़े। With your permission and with blessings of Honorable Minister, we would now like to formally launch the Startup Runway program through a digital video. May I request the team to please display the video.
Thank you, iHub team, for presenting this new program in a unique way. Thank you, Manya Mantri Sri, for launching this program. This will benefit more than 20,000 student innovators and startups across the nation. Now, I would like to formally introduce our Honorable Chief Guest, Honorable Minister of MSME, Shri Pratap Sarangi ji. He is the Minister of State in the Ministry of MSME and Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, Dairying in the Government of India. He represents Balasore constituency in the current Lok Sabha. Before his stint in the Parliament, he represented Nilgiri constituency in the Odisha Legislative Assembly for 2 consecutive terms. He is a mass leader for whom public interest is always paramount. He considers his duties as an MP and also as a minister in the Indian government. It's very important. A no-nonsense politician, he has the gumption to tell the unpleasant truth in public interest, regardless of political ideologies, and advocate for public good. A man deeply rooted in India's ancient cultural tradition, he says that he practices simple living and high thinking in his life motto. He believes that quality of education must receive the country's undivided attention and priority. He strongly believes education is something which gives a lever to change the future. His deep commitment to educational excellence of our children living in rural and tribal areas has enabled him to focus on primary education in rural areas through the innovative concept of community-funded Ekal Vidyalaya or single teacher schools. He also opened schools for the poor called Samar Kara Kendra under the Gyan Shiksha Mandir Yojana in tribal villages in Baleshwar and Moirvanj. Such is his commitment to the educational upliftment of poor children that even today he spends a portion of his salary to support the education of poor children in the area. Sir Sarangi ji has deep abiding commitment for the rural upliftment. A great believer of Mahatma Gandhi and Swami Vivekananda's philosophy, he agrees with the philosophy that India lives in the cottages, and unless the work for the betterment of the poor and deprived section achieves its goal, we cannot have an inclusive growth. As a Minister of State under the leadership of Honorable Prime Minister, his endeavor is to secure this holistic development that touches the life of the common man at the grassroots level. Having said that, now I would like to request Honorable Chief Guest Pratap Sarangi ji to deliver his keynote address and inspire all the participants. Namaskar. Professor Himanshu Pandya, Chief Mentor, iHub, M. Nagaranjan, Director of Higher Education, Government of Gujarat, Sri Anju Sharma, IAS Principal Secretary, Education Department and Chairperson, iHub, Government of Gujarat, and all who are present in this digital platform. I congratulate you all for having invited me to share my ideas with you. And I'm not here to inspire you, but to be inspired by you, because you are real in the practical field, who are working to materialize the Startup India mission of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Modi ji has always been an advocate, a champion of technology. Now we understand the importance of technology in this global pandemic, when we cannot meet each other, when we cannot organize big meetings, but we can contact with persons throughout the world through this digital platform. This is the boon of technology to all of us. And this is a unique idea. I know this subject is very vast, but my knowledge is limited and the time also very limited, because I shall again have to run to Parliament. But the idea is a unique one. This iHub and Startup Runway is a very wonderful idea. I congratulate you all for that, and especially the Government of Gujarat for having floated this idea and materializing this idea. Probably Government of Gujarat is the only state government having a dedicated policy for supporting student innovation and startups by Higher and Technical Education Department in the form of student startup and innovation policy. So not only this policy, they are also financing the startups, the young innovators, and that is a great achievement of Government of Gujarat. Government of Gujarat is the best performing state in this field, I can say, and so they are really welcome. And I urge other states to follow this model
of government of Gujarat, because in many states our student innovators don't get any hand-holding support. I remember an incident when Swami Vivekananda and Jamsetji Tata were moving in a ship. Swamiji was going to address the Parliament religions, and Jamsetji was going for his business. Both of them talked each other about their destination and the purpose of going. When Swamiji came to know that Jamsetji were trading different steel materials, purchasing it from foreign lands and selling it in Indian market, he told, 5 in your education, you may be rich, but your country cannot prosper. Jamsetji asked, why? Swamiji told that a country which exports raw materials to a foreign land and purchases foreign goods after value added there is a baby in the field of industry. By the time we were sending iron ore, manganese and all the raw materials, our minerals, and purchasing foreign steel products, and we were selling our cotton, our farmers were producing cottons, and we are selling it in low price, and we are purchasing cloths from Manchester. And although India is surrounded by ocean on 3 sides, we are purchasing salt from Liverpool. So our economy was completely finished. And then Jamsetji asked, what is to be done? Swamiji immediately replied, instead of being a trader or merchant, be a producer. Crush your mountain, dry your oceans, and dig your mines. Create enough employment opportunity. Have your own research and innovation wing. Develop your own processing plant. Like that, and now we see how the direction of the entire Tata Group of Industry changed, and what is the gigantic volume of this group of industry. So this way, we should think of becoming a producer. Now this corona pandemic has taught us many things, and there are many beautiful sides of this pandemic. Although human life becomes in standstill, but there are new avenues, new opportunities under this disastrous effect of this pandemic. Now, Narendra Modi ji, our Honorable Prime Minister, at the beginning told that Jaan hai to jahan hai. So first, lockdown was announced to protect our life, then livelihood. Then again, when she saw that this will be a prolonged affair, then he said, Jaan bhi, jahan hi bhi. Life and livelihood should go together. Again, he declared, Jag se jan tak, from individual to the whole world. Now, during this pandemic, we came to know how vulnerable we are. We depend for many things on foreign producers, foreign companies. During pandemic, before pandemic, we did not have a single PP kit produced in our country. We had to import it from China and other countries. Now, we are producing more than 450,000 every day, and we are exporting PP kits. So a national resolve was necessary, and Narendra Modi could impress upon the people, in spite of all this disastrous and disappointing situation, the faith and the strength of hope and a sense of determination for making India. And he declared a goal, that is Atmanirbhar Bharat, vocal local product with global outreach. That was the slogan given by Narendra Modi, and soon it became a national region. We were importing bamboo sticks for incense, dope, from China 78% and from Vietnam 21%. Now the duty on import from foreign countries was raised by 25%. So almost it has been stopped. But a problem came. Immediately we did not have a Swadeshi alternative. That was discussed on the departmental meeting in our ministry. And I suggested that we can develop that industry, and before that we can to pass through this transition period. That is a beautiful idea, that we can start incense without stick. And our Gaumata offers the raw material for that. Out of cow dung, adding some other powders, we can prepare dopes without any bamboo stick. Not necessary. So this we should have to think in a new manner, in an innovative manner. And now our young talents are ready to
bridge this critical gap, but they should be given support. Unless the ideas are materialized, it has no value. So we should support them to materialize their ideas. I remember a story, one science lecturer was lecturing on Archimedes' principle, how things float in the water, how to swim, what is the basic principle. By that time, a small baby fell into the nearby water bodies and students shouted, "Oh, sir, please save that boy." Now the teacher told, no, I know the science of swimming. I do not know the art of swimming. Then the students replied, then it will do nothing, sir, if you know only the science of swimming, and if you cannot swim, that makes no sense at all. Eloquent speeches makes no sense at all. Similarly, we should have the courage, the technical knowledge, and the idea and the opportunity to translate our ideas into action. Vision without action is a delusion, and action without vision is confusion. And vision, mission plus action is perfection. So Narendra Modi's ideas of Startup India, vocal for local product with global outreach, has a great significance which we will have to translate into action. Our government has declared many packages, starting from Garib Kalyan packages and other packages of 20 lakh crore to revive our economy. It starts with my department, my ministry. 3 lakh crore collateral-free loan to standard accounts which are not NPAs but are on the way to NPA. But many units do not know how to apply, how to get the loan, and bankers are not cooperating. But we shall have to face this situation boldly with a cooperative spirit. Not competition, but cooperation shall be the slogan of the new age. Now, there is a lacuna that only 20% of their outstanding loan they will get. Those who have repaid the loan or those who have not taken the loan will be deprived of this facility. Now, we are thinking of amending this particular provision and to allow those who have not taken loan and those who have repaid the loan. The second sector is the subordinate debt fund that is arranged for the stressed accounts, those who have declared NPA. Prior to Corona, they had no other chance of revival. The only way was open to them was the bank will come and croak their property, auction their property to recover the amount of loan. They have given a chance for relief. They can take loan from this subordinate debt fund. And the third one is for the healthy accounts, which accounts are really healthy, whose track record is good, financial record is good, market is good. But for this COVID-19, for 4 or 5 months, their business stopped, their production stopped, their market crunched, and their value chain also disturbed. So, how to revive these units? Government is given 10,000 rupees, 10,000 crores of rupees as a mother fund, as a corpus fund, and from market through equity infusion, 40,000 rupees will be collected. And so there will be a fund size of 50,000 rupees. And they can revive, they can restructure, reorganize their units out of this fund. But for startups, what is the program? There are other existing traditional schemes like Spurti Cluster, Aspire, PMEGP, CGTMSE, out of which they can take loan. But it's not that easy. They should know the technical know-how, how to apply, how to register under Udyam, how to prepare DPR, and how to get it approved through the DIC or the DIE or the NSIC, like that. And how to take the guidance from NSIC or the toll rooms or the extension centers, and how to have global market access. So how to make them update with the latest technologies. There are many dimensions of this whole program so that they can enrich themselves and they can take the benefit of the schemes. Now the question arises that what should be the time gap? How these plans will be fruitful?
There is no time gap. It can be done with a very small time or it can be a longer time. This depends upon according to the wisdom of the entrepreneur and how he gets the support from different agencies. Here comes the role of your startup runway. There are two types of energies. One is crude energy, another is human energy. Raw coal is useless. It's a source of energy. But if we pass it through processing technologies, then fuel will come. It can run a train, it can run a machine. Then many chemicals will come. Saccharin will come. And radium will also emerge from out of that coal. It is unbelievable but true that out of this coal, radium, a very brightest material comes, which is the panacea for cancer and all that. But although it is unbelievable, it is true. Similarly, human energy, we put so much of emphasis, we spend so much of time, energy and money for processing this crude energy. But might be coal, petroleum or anything else. But we put very less emphasis on processing this human energy. Because human resource is the biggest resource. And if it is properly processed, then all these natural crude resources will be processed by that excellent human energy. And wealth will be produced. And how to process this human energy? The answer is education. Swami Vivekananda said, education is the manifestation of perfection already in man. जो अंतर्निहित सामर्थ्य है, पूर्णता है, उनको विकसित करना, अभिव्यक्त करना, यही शिक्षा है. And ideas running right undigested all your life cannot be called education. If you take one idea and make it your life, then you have more education than a person who has got by heart a whole library. For many years, our universities thought that remembrance is the only source of knowledge. Had it been so, then encyclopedias would have been the greatest and wisest professors. It's not like that. There are other faculty of human mind. This creativity faculty, we have neglected for years. Now, time has compelled us to put emphasis on that. I have been happy to learn that our young entrepreneurs, student entrepreneurs from Gujarat, innovators, they are earning money by millions every year, by $1 million, US dollars every year, even before they are becoming graduates. Earning while learning is a beautiful concept. So instead of becoming employee, we can become employer, and that sort of knowledge should be imparted to them so that their confidence level will be raised. This self-confidence is quite essential. Self-trust is the secret of success, said a great man. So education's main role is to develop this set of self-trust, self-confidence. Swami Vivekananda said, faith in Lord, faith in yourself. If you have faith in the 330 millions of your mythological gods and goddesses, and in all the gods and goddesses which foreigners have introduced into your midst time and again, but have no faith in your own self, there is no salvation for you. So first necessary is self-trust, self-confidence. You should develop an idea of Shraddha. Shraddha, I remember a very beautiful incident of Kathopanishad when Nachiketa revolted against the misdeeds of his father. He was pretending, and he came and protested in a very polite manner. Oh, father, whom do you give to me? Because according to these provisions of this yajna, all property should be given. And I am your property, whom are you going to give me? Now, his father, Vajasravasa Rishi, out of anger, told that, I give you to Yamaraja. Kasmaimang dasya shviti Nachiketa asked, it will that mrityu tvam dadamiti, I offer you to the god of death, Yamaraja. Nachiketa told to himself, Bahunamesi prathamo, Bahunamesi madhyamo. Kings with Yamasya kartavya, yanmayadya karishati. I am first among many. I am standing among many in the middle row, but never I am standing in the last one. So, what the Yamaraja will do with me? Let me go and meet death face to face.
He went to Yamapura, and the god of death was absent from the headquarters. He was on tour. But Nachiketa stood there for 3 days, and he was offered food, drink, and rest and lodge, but he refused. He told that no, until and unless I see the god of death, I cannot take anything. Upanishad says, Shraddha avivesa. Shraddha entered into his heart, so she stood with utmost confidence and concentration. When Yamaraja came, he begged apology. Go Rishi Kumara, I may be pardoned for my delay in coming, and you faced such a discomfort. So please ask 3 boons for 3 days. He asked very ordinary boons in the first 2. Then in the third boon, he asked a very important boon. He asked, some people say that man's whole existence is finished with the demise of his physical body. And some are of the opinion that no, this physical body made of 5 gross elements will merge in the cosmic elements, and the inner soul, the self, the inner spirit, which is the real existence, will survive. It is eternal, beginningless and endless. So tell me, Yamaraja, what is the real truth? Now Yamaraja offered him many temptations. He told that, no, don't ask this, Nachiketa, please. This is not known by the gods also. This is quite durvigya for gods, for devas. So if you want, I can say it, any other boon I can give. I can make you the Indra of Swarga. I can make you the owner of Amaravati Puram. I can grant you the boon of Anima, the Ashta Siddhi. Whatever you want, the whole treasure, the whole wealth of the heaven and earth will be given to you. Then Nachiketa asked, can I get truth face to face by this boon? No. Can I get immortality? No. Can I visualize God? No. Then I have nothing to do with this faltu boons. I want only this, and you are the real preceptor, and I want your guidance. Then Yamaraja taught him, practiced him, and while coming, he told that Uttishtata Jagrata Prapyavaran Nivodata. Swamiji translated it as arise, awake, and stop not till the goal is reached. So this should be the madness. You may be failed several times, but you should have the courage to start another innovation. Until and unless you reach your goal, you should not stop your work. You should not allow anything to arrest your step. That should be the courage of an entrepreneur. And I remember a sloka. Prarabhyate nakalu vigna bhayena niche. Prarabdha vigna bhita viramanti madhya. Vignahi punaha punarapi pratyanyamana. Prarabdha muttama jana naparityajanti. There are some people who will not start any innovation, any work, any entrepreneurship for fear of loss. They will not start agriculture, farming, because there may be flood, there may be famine. They will not. They belong to the third category, the worst category called adhama. There are some people who will start the work, but if a single problem will come, they will stop it. Suppose somebody started coconut farming. 5,000 coconut plants were planted, and after 6 months, one of their relatives died, or their family member died. Now the Pandits in the village came around him and told that you have done a wrong thing. We were going to sell it, but you did not obey. Now you see what is the consequence. Because you planted coconut tree, your uncle died. And this man, his brain was contaminated by superstition, and superstition is the biggest danger in the progress of humanity. So now he stopped coconut planting. He cut all the coconut trees, and he was under the intoxicant belief, the superstition, that coconut is not conducive to my family line. So after 500 years also, they will be purchasing coconut from the market, and if somebody will say, why don't you plant a few coconut trees? You are having such a big piece of land. No, it is not conducive to our family line. It will finish us. So this is a biggest enemy in the field of entrepreneurship, this superstition. Many false babas come and they loot money by lakhs, crores from superstitious businessman.
The third one is Vignahi Punah Punarapi Pratyanyamana, being obstructed, injured. Why? Many types of challenges. The successful man marches ahead, and after 1,000 times of failure, he makes a new start. So all our startups should wear this mind. And with this madness, we should try to create a new India. We should process our natural resources. India is a land of controversies. India is a land of contradictions. Here, extreme richness and extreme poverty have a coexistence. Extreme wisdom and extreme illiteracy coexist. Extreme strength and extreme weakness coexist. That is a tragedy with us. There are sky-touching persons, but until and unless the average man's growth is assured, a few top people cannot transform the fate of the nation. And education is nothing but transformation. You are having a 50-hour course in 25 classes, 2 hours each. It is good. But what is the value of the education? Its education is not to get by heart and reproducing or vomiting in the answer scripts. Education is being and becoming. Transformation. I remember this lecturing method, taking 128 or 150 students in a class and one lecturer will lecture from the pedestal, is a very dangerous method of teaching. The worst method of teaching which has been imported from Europe. Our ancient method of teaching was very living. It was interaction was the method. Books were not used, and such living education can never be dull. It was a living education. I remember one story. One bright disciple asked his teacher, Guru, in a forest university, "Oh Guru, please tell me that which plants do not have medicinal properties?" The Guru told that I have taught you the process of experimenting. You go and learn for yourself. Don't ask this question. You learn. The student went to the forest with all his instruments and he started his experimentation. 6 months passed away, the student did not come back. 7 months, 8 months, 9 months. Then the teacher, out of anxiety, went into the deep forest and found his student busy experimenting. Then he asked, "Why did you not go back?" "Because, sir, my experiment is yet to be completed. Years long experiment gave a beautiful result. Do you know what came out? A fundamental principle of our Ayurveda came out of that experiment, that is Nano Shadhi Midam Jagat. There is nothing in the world, not only plants, but bricks, soil, earth, sands, water, sun ray, whatever is in there in the creation, everything is full of medicinal properties. Full of medicinal properties. And this disciple's name was Charaka. He was an expert in those days in the field of medicine, and another expert was Shusruta in the field of surgery. We are the teachers of the world in the field of medicine, medical science. We are teachers in everything else. We are teachers in medical science, we are teachers in mathematics, algebra, arithmetic, geometry. We taught the world the knowledge of zero. Just imagine if zero would not have been discovered in India, how precarious would have been the position of our mathematics today. So, we should be innovative. This innovative faculty is there in the student. We are to encourage it. And now this 50-hour class should only ignite the fire of learning among the students. Ignite self-confidence among the students. They are having everything. The teacher cannot teach anything. The teacher can teach nothing. Everything is in the student. Swami Vivekananda used to say, what we say learning is in strict psychological sense is what we discover. Newton was watching how the apple falls. Everybody, millions of people are watching every day, but nobody thought over it. But Newton wanted to know why the apple is falling. Why the apple is not going up, why it is not going northward, southward, eastward, westward. He thought over the point, thought over the problem,
for days together, and he discovered a missing link in his own brain and connected it and named it as the force of gravitation. The knowledge was within. It was only discovered. The missing link was connected, and the whole world gets benefit out of it. Like that, our mind is the infinite treasure house of knowledge. And in English, they say, knowledge is power. This knowledge can empower us. We shall have to discover it, dive deep into our mind. That is the source of all knowledge. So we should know how to train our mind, and that is the education, real education. Your this beautiful and bright class will enable our young entrepreneurs to think very systematically, to arrange things in order in their mind, and to discover, to innovate, and so that our country will be prosperous. That should be the goal, Atmanirbhar Bharat. Now, there was a flow to the cities. Unfortunately, in India, urbanization means more dirt, more slums, more disease, more pollution, which should not have been, but it is a fact. So now people have a different, an opposite flow. After this pandemic, they're asked to our villages. Many people are in a very precarious condition. Our young innovators should have a big dream. Small dream is a crime, said our ex-president Abdul Kalam, former president Abdul Kalam. Swami Vivekananda also said, you are all born to do great things. Believe in it. The sooner you believe, the better. You are not only a dry leaf to be floated away in the wave of the history. You can change the course of history. You can create your own fortune, and you can build the fortune of our nation. In this great process of rebuilding the nation, let us join our hands together with our great and honorable Prime Minister Narendra Modi, who is working day and night and who is making his whole team work for the rebuilding of our nation. India was begging a few years back. With a begging bowl, India is moving throughout the world. Now, India supplied hydroxychloroquine to the whole world. India donated billions of rupees to Russia. India is now a global leader. Our great Prime Minister Narendra Modi proposed in the United Nations that June 21 should be observed as the International Yoga Day, and the whole world responded very enthusiastically. More than 190 nations performed it. That means the spiritual leadership of India was accepted globally under the able leadership of a champion like Narendra Modi. So this is high time that India has achieved many great things. Be it elimination of 3370 or 35A, be it elimination of Tin Talaq, be it the legislation of Citizenship Amendment Act, or be it facing the China's army with all courage and allowing them not to move an inch towards India territory, or the construction of Sri Rama temple. India's prestige is very high now. And Indian soldiers under the able leadership of Narendra Modi crossed the boundaries and finished the terrorists, the ICE agents, even the Pakistani armies in Pakistan and Myanmar. So our prestige is sky high now. Now this is a time for work. We can work hard. Work hard with a nobler mission. If you work hard, if you innovate for your own personal profit, then your goal is very limited, and the chance of your greater success is also limited. But you work hard with a nobler mission that will charge your mission, and your success will be very wide and very big. One example would suffice. Somebody was three laborers were working in a breeze. A passersby, while moving, saw that in the scorching heat they are working very hard, they may be tired, and he asked the first laborer, why are you working without taking rest? This is the time to take rest. Now he told that, no, this is not the time to take rest, because
I am a slave. I have no liberty. I work for my master, otherwise my whole family will be without food. He went to the next one. Where are you working? Please take rest. No. That cannot be done. Because I have to feed my family and this is abundant duty on my part. Although I am not interested, but I have no other option. Then he went to the third one. The third laborer was asked the same question and his face was turned red with joy, fright. He told, you see, sir, my village is separated from the outer world by this river. We cannot go to the hospital. We cannot go to the fire station. We cannot go to the market. Our students cannot go to the school during rainy season. We are suffering a lot. Now government has granted funds for the construction of this bridge. And if we don't work, it will take a long time for the completion of the bridge. Now I have been fortunate enough to be given a chance to work here. Now you see, the three laborers will get the same wage. But the psychological satisfaction which the spiritual satisfaction which the third laborer will get, the others cannot be. Because of this attitude. So with this attitude, if we go on innovating, our young entrepreneurs, with this mad patriotism, if they work hard, then there will be a financial revolution in India and you will all be the makers of history. So I appeal to you all, put all your energies, all your brains, all your minds for this revival of our Indian economy. Not only economy, the entire socio-cultural life of India. You can do that. There is a great past behind us. And our present is also becoming great, although sometimes it was a decadence. Now gradually we are growing up. And we can see, we can visualize the greatest future that is waiting for us, which was prescribed, which was prophesied by Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, and many other great men. Who will materialize it? We will materialize it. You young entrepreneurs, I will be happy to see you shining like stars in Indian horizon, Indian skies, and creating history. You are the makers of destiny of yours and of India and of the whole world. India will be the world leader very soon under the leadership of Sri Narendra Modi. I have strong belief in that, and you are all the stakeholders of this great. I remember today, you can join many sectors for your innovation. Our villages can be made green village, clean village, digital village, organic village. Organic farming should be a priority for all of us. And there are many sectors which we can prefer khad, prefer our Panchagavya industry should be developed as a Gramodyoga, so that we can feed all our people. Our khadi, our charkha, our Panchagavya can be a biggest source of innovation, and we can provide everything for our people out of these 3-4 things. Images are built of this cow dung, deeps, dopes, sabun, soaps, and many things else. Even rakhis, there are 101 articles produced out of cow dung, and medicines are prepared out of this urine of the cows, and pesticides are also prepared. Many things are there. Waste management is a beautiful sector, and our young innovators should put their brain for this. Our e-waste, our kitchen waste, our industrial waste, our agricultural waste can be processed, can be recycled, reused, and we can create more employment in this field. Floriculture, agriculture, agro-waste industries, food processing plants. Thus, we can add value. Potato is sold at 5 rupees a kg during the time of production, and at other times our farmers are purchasing potato at 50 rupees. Potato chips at 500 rupees. Our farmers can produce potato chips, tomato sauce, achar, jelly, juice, jam, odi, papad. So they can be trained, they can provide some marketing support, some financial support, and they can have a direct access to market. And our MSME is providing this direct access to global markets even. Our rural artisans preparing many things out of brass, out of different metals,
our saris, our khadis, our embroidery, and the mediator is looting them. If they are provided access to the global market, they will get direct money. From mine to market is your concept, and that is a good thing. We should see that our people are not exploited. कर्ज मुक्त किसान, रोजगार युक्त नौजवान, जहर मुक्त आहार, ये सब आज बहुत जरूरी है और इसलिए हमको विज्ञान का उपयोग करना है, प्रयुक्ति विद्या का उपयोग करना है. And you are the stalwarts, you are the champions who will do this. Never mind a failure. There may be 100 failures, but you will come out success if you try more. And that's the teaching of Bhagavan Sri Krishna in the Gita. I believe our young entrepreneurs will do miracles. They are born to do miracles, to make possible the impossibles, and not to cry but to roar and to create history. And I sincerely believe that our young entrepreneurs will do this, and their talent will be used for the service of the nation, for new innovation, to create our country as a manufacturing hub in the world, and to take to such a height which the world will feel jealous of. With this I conclude. Namaste. थैंक यू सो मच माननीय मंत्री जी. आपके उद्बोधन से पूरी जो इनोवेटर कम्युनिटी है, जो स्टार्टअप्स हैं, सिर्फ गुजरात से नहीं है, इस प्रोग्राम में पूरे देश के इनोवेटर जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से. उन सबको काफी इंस्पिरेशन मिला और वो जो आपने जो मार्गदर्शन दिया, आपने जो सीढ़ियां बताई, जिस तरीके से परसिस्टेंस के द्वारा, प्रिजर्वेंस के द्वारा इनोवेशंस को माइंड टू मार्केट पे ले सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मंत्र रहेगा. मैं अब अनुरोध करूंगा श्री एम नागराजन, कमिश्नर हायर एजुकेशन एंड ऑनरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ iHub, टू ऑफर ए फॉर्मल वर्ड ऑफ थैंक्स. आज के स्टार्टअप रनवे के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहे माननीय केंद्र MSME के राज्य कक्षा के मंत्री श्री माननीय श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, आपको गुजरात सरकार की ओर से, शिक्षण विभाग की ओर से और सभी स्टार्टअप और छात्रगण की ओर से मैं हृदयपूर्वक आभार मानता हूं कि आपने आपका अमूल्य समय बिताया हमारे साथ और हमको प्रेरणा दी. खास करके आइडियाज टू एक्शन, वोकल फॉर लोकल और एजुकेशन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ह्यूमन एनर्जी, ये सब हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा भरी चीजें हैं. और भी बहुत सारे आइडियाज हैं आप हमको दिया है आज. और बीइंग और बिकमिंग, ये भी एक बहुत ही अहम चीज है जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए. और iHub में और स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी में भी हम ये मानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक खुद को पहचानने की जरिया है. ऐसा मान के हमको इसमें उतरना चाहिए और स्टूडेंट्स को बहुत ही यंग एज में उनको इसके बारे में एक्सपोजर देना चाहिए. तो इस श्रृंखला में आज की जो कार्यक्रम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की ट्रेनिंग के बाद और इंक्यूबेशन मैनेजर्स की ट्रेनिंग के बाद अब स्टार्टअप की जो रियल एंटरप्रेन्योर हैं उनको उनकी स्टार्टअप करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम का गठन किया था. और इस गोल्डन अवसर पे आप आए तो हमारे सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक मिला है. सर, थैंक यू वेरी मच. इन सबकी ओर से मैं आपको अदा करता हूँ. और हमारे कायम प्रेरणा स्रोत हैं हमारे माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा साहब, जो आज उपस्थित नहीं रह पाए, लेकिन उनकी शुभेच्छा हमारे साथ हमेशा रहता है. तो उनको भी इस अवसर पे मैं आभार मानता हूँ. और ये पूरा विजन को जमीन पे उतारने की काम और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेस, मेन एंड एनर्जी पूरा लगाने की जो स्रोत है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन अंजू शर्मा मैडम, उनके प्रेरणा भरी बातों के लिए भी मैं उनको आभार मानता हूँ. हिमांशु का भी स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है उसके लिए हमको सपोर्ट करते हैं, वो भी आज उपस्थित रहे, उनको भी मैं खूब खूब धन्यवाद मानता हूँ. और CEO हिरणमय, उनके टीम iHub में जो अच्छा काम कर रहे हैं और आगे स्टूडेंट और स्टार्टअप की इकोसिस्टम गुजरात में उसको डाइवर्स और हर एक गांव तक पहुंचाने की, हर एक तालुका तक पहुंचाने की जो काम है वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की अच्छा कर रहे हैं. तो उनको ये आज का कार्यक्रम आयोजन करने के लिए धन्यवाद देता हूँ. और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारे दर्शक मित्र हैं, स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑनलाइन में, फेसबुक में, हर एक जगह पे जुड़े हैं, आप सबको मैं iHub की ओर से खूब खूब धन्यवाद मानता हूँ. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. थैंक यू सर.